Hello 6th standard students, welcome back to our channel Vidyarthi. We were discussing about the lesson natural numbers and whole numbers. Now coming to the topic estimation. So what is estimation? So estimation means it is not the exact sum, difference or the product. It is an estimated value. Means not exact. First you round off the numbers and then you find out the sum, difference and the product. For that, first we have to understand what is rounding off the numbers. So remember, this topic has been covered in the 5th standard. So first we will revise that topic, round off the given numbers as directed. First, 48 to the nearest 10. Now 48 to the nearest 10. So they have told 10 means underline the tens place. Now the number onto the right of tens place is 8. If that number is 5 or more than 5, if that digit is 5 or more than 5, you have to increase this 1 digit. Otherwise, it has to be the same. So, 48, 8 is bigger than 5. So, it will be 4 plus 1. That means 5. And on the right hand side, it will be the ones side, it will be 0. So 48 is round off to 50. It is nearer to 50, isn't it? That's why. Now to the nearest 1000, underline the thousands place. It is 3. What is the digit onto the right side of that? It is 2, less than 5. So 3 remains as it is and 3 zeros. Means it is a 3000. 3285 can be round off to 3000. Now nearest to 10 lakh. Underline the 10 lakh place. Ones, tens, hundreds, thousand, 10,000, lakh, 10 lakh. Now see the digit onto the right. It is 7 more than 5. So 8 becomes 9. Now it will be 90 lakh. Next, nearest crore. Ones, thousands, lakhs, and this is the crores, isn't it? So this is nearest crore. So the digit to the right is 5 or more than 5. You have to increase by 1. So 4 became 5. Then all it will be zeros. So 4 crore and 53 lakh and all. It became 5 lakh. 5 crore, sorry. Understood? Hope you understood till here. Now coming to the decimals. To the nearest ones. This is the ones place. So the place to the right of ones is the tenths, isn't it? So first decimal. It is 8 means more than 5. So this can be written as now 3 plus 1, 4. That is 4.00. That means it is 4. Now nearest hundredth. Tenths, hundredths. The digit to the right is 2. So smaller than 5. That is why it will be 21.47 as it is and 0. That means 21.47. Now coming to the question number C.
नियरेस्ट टेंथ्स इस डेसिमल के बाद फर्स्ट डेसिमल प्लेस. सो द डिजिट टू द राइट ऑफ दैट इज 3 lesser than 5. So this remains as it is 1.50, that is 1.5. सबको समझ में आ गया है? जो भी प्लेस बोले हैं उसको अंडरलाइन करो, उसके राइट साइड का डिजिट को देखो. अगर वो 5 नहीं तो 5 से ज़्यादा है तो जो अंडरलाइन किया है वो डिजिट को 1 बढ़ाओ, नहीं तो वैसे ही लिखने का और राइट साइड में जितने प्लेसेस है उतने ज़ीरोस डालने का है. डेसिमल में डेसिमल के बाद ज़ीरोस रहता है तो उसका वैल्यू नहीं रहता है, इसके लिए उसको निकाल के फाइनल आंसर लिखने का है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. राउंड 4,25,163 टू द नियरेस्ट 100, 10,000 एंड लाख. सेम नंबर को अलग अलग तरीके से राउंड ऑफ करने का है. फर्स्ट इट इज नियरेस्ट 100. सो अंडरलाइन 100 प्लेस. सो द डिजिट टू द राइट इज 6. सो इट इज मोर देन 5. सो लेफ्ट साइड में जो है वैसे ही लिखने का. 4,25,000 और 1 अभी बनेगा 6 मतलब 5 से ज़्यादा, तो ये बनेगा अभी 2 एंड 0 0. सो 4,25,200. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, टू द नियरेस्ट 10,000. अंडरलाइन द 10,000 प्लेस. नाउ सी to the right of that is 5. मीन्स बड़ा है तो इसको 1 डिजिट बढ़ाओ. सो 4 एज इट इज, तो 2 बनेगा अभी 3 और 0 आगे के 3 zeros. सो 4,25,163 बनेगा 4,30,000. नाउ कमिंग टू द नियरेस्ट लाख. लाख के प्लेस के अंडरलाइन करो. द डिजिट टू द राइट साइड इज 2 लेस देन 5. इसके लिए ये वही रहेगा. सो 4 और बाकी सब zeros. सो 2 0 and 3 0. So you got 4 lakh. Hope you understood this. This is the rounding of numbers. So underline the place whatever it is mentioned. Then see the digit to the right of that. If it is 5 and greater than 5, then the digit of the place should be increased by 1 digit. And then right side. So how much places, how many places are there? So many zeros you have to put. Okay, so that was the rounding of numbers. Now coming to the examples, estimation example. Estimate 4,356 plus 13,849. So estimation of the sum or the difference. For addition and subtraction, what you do? फर्स्ट इट इज 1000 में है, ये 10,000 में है. दोनों को 1000 में राउंड ऑफ करो. सो 4,356 राउंड ऑफ टू 1000. सो 4 को अंडरलाइन करो, राइट साइड 3 है तो ये रहेगा 4,000. अब इधर 13,849, तो 1000 का प्लेस 3 है. टू द राइट इट इज 8. सो बड़ा है, 5 से बड़ा है तो ये बनेगा 3 + 1
मतलब ये बनेगा अभी 13,000 का 14,000। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन 4,356 प्लस 13,849, this you are writing it as 4,000 plus this you are writing as a 14,000. So answer will be 14,000 plus 4,000 is 18,000. Okay. Now coming to the example 13, it is this is in thousands, this is in hundreds. So जो कम डिजिट वाला है तो उसमें वो प्लेस में आप लोगों को राउंड ऑफ करने का है। सो 7,412 ये हंड्रेड्स में है, तो इधर भी 1000 एंड 10,000, तो इसके लिए 1000 में किए, इधर 1000 और 100, सो हंड्रेड्स में करो। ओके, हंड्रेड्स को अंडरलाइन करो। राइट साइड में 1 है तो छोटा है, तो इट विल बी 7,400। अभी 2, 3, 6, सो 100 का प्लेस इज अंडरलाइन, to the right it is 3 lesser than 5, so it remains 200. Okay, now 7,412 minus 236, it is 7,400 minus 200, it will be 0, 0, 4 minus 2, 2, 7. So it is 7,200. Is it okay? So hope you understood this estimation method example. Okay then, bye. Thank you.